Hi, good evening, everyone. One second. Okay. So with the title itself, all of you know this session is regarding UGC NET 2024 June attempt. Okay. So you usually have two attempts in case of NET exam. One is in June, the other one is in December. तो आपको साल में दो बारी ऑप्शन मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है टू सिट फॉर यूजीसी नेट एग्जाम. ठीक है. This is for all the students, of course, जो first time दे रहे हैं and who are not exactly aware about UGC NET. ठीक है. Now, for the upcoming exam in June 2024, finally the registration, the information bulletin, date, everything is officially released by NET, मतलब UGC for June 2024 attempt. ठीक है. So if you look at this is the public notice NTA released by NTA, okay, which is dated 20th of April, around 2 days back, right? So overall, if you look at for June 24, it is for, first of all, JRF, Junior Research Fellow, and the eligibility for Assistant Professor. Okay. Overall, 83 subjects हैं. ठीक है. Economics is, of course, one of them. ठीक है. तो ये आप जो एग्जाम है किसके लिए बैठते हो? फॉर JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर. ठीक है. एंड एडमिशन टू PhD इन 83 सब्जेक्ट्स ओवरऑल. ठीक है. अब ये पेपर कैसा रहेगा? इट्स नॉट कंप्यूटर बेस्ड CBT पेपर, इट इज अ OMR पेन एंड पेपर मोड. ठीक है. सो अनलाइक जो यूजुअली आप देखते हो, दिस वन इज पर्टिकुलरली फॉर रिलेटेड टू OMR शीट पेन एंड पेपर टाइप का पेपर रहेगा, अनलाइक कंप्यूटर बेस्ड. ठीक है. Now, coming to the date of examination. ठीक है. सबसे important date of examination is 16th of June, which gives you approximately 2 months to prepare for June का session or June's attempt. ठीक है. Approximately 2 months, right? Now, application started as and when ये आपका public notice जैसे ही release हुआ, which was 20th of April, and it is open till 10th of May. Again, roughly 20 days for you to complete your application, online application form. ठीक है. 20th April से 10th of May तक is the last date, right? Up to 10:50 p.m. Cool. Now, one thing is filling of application form. The other one is making the fee payment. ठीक है. So filling of application form का date है that is 10th May. और in case आपने का 10th May तक fee payment नहीं किया है, then there is another additional grace period which says last date of submission of examination fee through credit card and all the other options is 11th of May से 12th of May. ठीक है. So just in case अगर आपने एटलीस्ट बाय 10th of May आपने एप्लीकेशन तक सबमिट कर दी है, बट हाउएवर यू हैवंट मेड द फी पेमेंट, या आपने लेट्स सपोज आपने आज ही फॉर्म फिल कर दिया बट यू आर नॉट श्योर कि मैं ये वाला अटेम्प्ट दूं या फिर दिसंबर वाला अटेम्प्ट दूं, दैट्स व्हाई यू हैवंट मेड द फी पेमेंट. ठीक है. तो आपने अभी तक कोई फी पेमेंट नहीं की है, बट एट द एंड एट अराउंड 10th of May यू रियलाइज कि नहीं, आई वांट टू सिट फॉर जून अटेम्प्ट. ठीक है. आई जस्ट गो थ्रू कि कैसा पेपर आएगा, बिकॉज इन December लास्ट ईयर the paper was of a different zone altogether. काफी टफ पेपर आया था, काफी प्रैक्टिकल पेपर आया था. नो मोर theoretical approach for net economics जो सालों से चलता आ रहा था. So they have upgraded themselves to the next level. ठीक है. So you might think कि नहीं मुझे पेपर में बैठना है, let's see कैसा रहता है, and then I'll be more prepared for my December attempt. So you have 2 days post 10th of May, which is 11th May to 12th May तक भी आप अपनी फी पेमेंट कर सकते हो. ठीक है. Then correction in the particulars in online application form. 13th of May से 15th of May तक आपके पास जब बेसिकली फॉर्म सबमिशन फी पेमेंट का सारा पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स यू हैव द ऑप्शन ऑफ एनी करेक्शन इन योर एप्लीकेशन फॉर्म. आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी बाय मिस्टेक कहीं नाम में, डेट ऑफ बर्थ या किसी भी कंटेक्स्ट में, किसी भी पर्टिकुलर में अगर आपने गलती की है, सो यू कैन करेक्ट इट एंड मेक श्योर कि आप करेक्ट उसमें पर्टिकुलर्स ऐड करें. ठीक है. सो द करेक्शन विंडो इज 13th to 15th of May, right? Okay. Now
अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर, वो ऑफ कोर्स लाइक एवरी अदर एग्जाम वो आपको लेटर डेट पे बताया जाएगा, समवेयर अराउंड पोस्ट द एप्लीकेशन इज डन. Then of course download of admit cards right before the paper is about to happen. और date of examination is your 16th of June. तो first half के आसपास आपको first week या last week of May तक आपको admit card आ जाएगा. ठीक है. Center, date and shift as indicated in the admit card. राइट, जो भी आपको एडमिट कार्ड में दी जाएगी डिटेल्स की कौन सा सेंटर है, क्या डेट है, एग्जैक्ट मतलब एंड शिफ्ट क्या रहेगा, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग जो भी रहेगा, वो सारी डिटेल्स आपको आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन की जाएगी. ठीक है. अगेन बाकी कोई इंफॉर्मेशन इट्स नॉट रिलीज और शेयर्ड यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल आंसर की, रिस्पॉन्सेज एंड एवरीथिंग, वो दे विल शेयर ऑन लेटर स्टेज. ठीक है. Now coming to the application form part, so for journal it is 1150. Accordingly for all the three categories they have mentioned 1150, 600, 325. So these are your application fees जो आपको पे करनी होंगी. ग्रेस पीरियड है 11 से 12 मई तक, इन केस अगर आप 10 मई तक पे नहीं कर पाते हो फॉर वट एवर रीजन. ठीक है. इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने चाहिए बिकॉज दे आर इंपॉर्टेंट. सो कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली. कोई ऑफलाइन नहीं है, कोई कोरियर नहीं भेजना, कुछ नहीं करना, कोई पार्सल नहीं करना, जस्ट ऑनलाइन प्रोसेस है. स्पेशली फॉर द वंस जो पहली बार नेट के लिए बैठ रहे हैं. ठीक है. कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा. यूजीसी नेट एनटीए जो हमने यहाँ पे वेबसाइट ओपन की हुई है, ये आपकी वेबसाइट है, यहीं से सारा प्रोसेस रहेगा. ठीक है. नाउ द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज मेंशन. ठीक है. Only one application is to be submitted by a candidate. ठीक है. तो don't try to be over smart by applying multiple times. वैसे उससे कुछ होने वाला नहीं है because at the end of the day all your credentials, all your information will be verified and there can't be any duplication. So you will be considered, your application will be considered only once, and there are scenarios when your entire application might also get rejected. So simple, one application by one candidate. ठीक है. Will be allowed an application, strict action will be taken, likely expected. ठीक है. Now, candidate must strictly follow the instruction in the information bulletin. तो जैसे आपके पास CUT का आप जिस स्टेज पे आपने एग्जाम दिए होंगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आता है, वहां पे उसी तरीके से नेट के लिए भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जहां पे सारी डिटेल्स मेंशन है, जो विल सी इन द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट. ठीक है. Okay, not complying with the instruction shall be disqualified. Candidate must ensure that the email address, mobile provided in the application are their own or parents as. ठीक है. Because this is very important. ये मैं आपको हर एक फॉर्म के लिए बोलता हूँ कि whenever you share your mobile number, whenever you share your email ID, ये सारी जो डिटेल्स है वो इधर आपकी होनी चाहिए या आपके पेरेंट्स की होनी चाहिए, गार्जियंस की होनी चाहिए. ठीक है. सेकेंडली, इररिस्पेक्टिव चाहे वो आपकी हैं, पेरेंट्स की, गार्जियंस की, किसी की भी हैं, दोज शुड बी द वंस जो आप रेगुलर बेसिस पे यूज करते हो, नॉट द वंस जो डॉर्मेंट है. ठीक है. तो जो एक्टिवली यूज होती हैं वही वाले आप मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडीज ही वहां पे फॉर्म में फिल करोगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कभी भी आ सकती है and you can't have an excuse कि हमें नहीं पता चला, so and so you need to give as per the which you are using actively. ठीक है. So for any issues आप ये रहा उनका एड्रेस, नंबर, ईमेल आईडी एंड स्टफ, वहां पे आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते. दैट्स अबाउट इट फ्रॉम द पब्लिक नोटिस. कूल. ओके. जैसा मैंने बताया, ये रहा आपका यूजीसी नेट का मेन होम पेज. यहीं से ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन करोगे. जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, क्लियरली सेज यूजीसी नेट जून 2024 रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन. ठीक है. तो यहाँ आके आप फिल कर सकते हो. राइट. सो ये रहा आपका पोर्टल. अगेन प्रोसेस मोर और लेस सब आपको सिमिलर लगेगा बिकॉज यू हैव फिल्ड मल्टीपल फॉर्म्स इन द पास्ट एज वेल. ठीक है. न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगा. दैट्स इट बेसिक. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू ओवरऑल, एक छोटा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं अबाउट द इंफॉर्मेशन बुलेटिन. ठीक है. काफी अच्छे से बनाया हुआ है. सो लेट्स सी. अगेन एनटीएस विजन, मिशन एंड कोर वैल्यूज. इस पूरे बुलेटिन में ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, स्टार्टिंग विद द मोड, पैटर्न, subject, syllabus and all. So let's see.
फॉर एग्जाम्पल ये रहा फीस जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी देख ली, ये रही आपकी विंडो एप्लीकेशन, ये रही आपकी फी पेमेंट की एक ग्रेस विंडो, ठीक है, ग्रेस पीरियड। एनटीए, हाँ, ये रहा आपका एग्जामिनेशन मोड, ये मैंने ऑलरेडी आपको होम पेज पे दिखा दिया। ये रहा आपका पैटर्न, ठीक है। सब्जेक्ट आपके अलग अलग जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से आप अपना सिलेबस यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। एंड या पेपर 1, पेपर 2, 50, 100 marks and so on. Cool. 3 hour 180 minutes is the duration of the paper, very important. So basically examination pattern and everything we'll discuss in detail in a separate session. Overall ये आपका बुलेटिन है, अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ आती और यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन तो आप इसको रेफर कर सकते हो फॉर दैट, ठीक है। ओके, now let's come to one of the most important news, ठीक है, which is kind of related to both your net for PhD and of course with bachelor's as well and in between masters. So basically पूरा जो आपका structure है that is kind of correlated with this particular information, ठीक है, which is confirmed by the honorable chairman of UGC, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं that the PhD can be pursued directly after a 4-year bachelor's degree and 75% marks, ठीक है। दैट्स ऑफिशियल स्टेटमेंट बाय यूजीसी। तो कहने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था दैट यू नीड टू हैव मास्टर्स, आपको मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए थी आपकी टू सिट फॉर द नेट एग्जाम, ठीक है, विथ मिनिमम 55%। सो वही स्टेटमेंट यहाँ पे भी लिखी है, कैंडिडेट फॉर द नेट नीडेड अ मास्टर्स डिग्री विद अ मिनिमम 55% मार्क्स, राइट। अब सुनने में यहां तक आ रहा है कि अ स्टूडेंट pursuing bachelor's in any stream, ठीक है, of course with a 4-year bachelor's with 75% marks can appear and sit for any subject domain net exam, ठीक है। so अगर मैं कॉमर्स से आ रहा हूं आई नीड नॉट सिट फॉर कॉमर्स वाला पेपर, और एमबीए वाला पेपर आई कैन सिट फॉर इकोनॉमिक्स एज वेल, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट इज ऑल्सो कमिंग आउट, ऑफिशियल स्टेटमेंट इज येट टू बी सी कि हाँ ये जो चेंज है, ये जो शिफ्ट है, इज एक्चुअली फाइनली एग्रीड अपॉन और नॉट, ठीक है। सो दैट विल सी नाउ। 4 year can now directly appear for, हाँ, तो अभी we all of us know कि DU में भी for example you have that 1 year additional option to pursue a bachelor's, ठीक है। so therein this is the point that comes into picture। तो पहली बात 4 year का system आया क्यों? If you look at the education system abroad, ठीक है, so this phenomena is pretty common out there, ठीक है। दूसरी चीज, for pursuing masters abroad, many of the universities, some of them in UK and of course some of them in US as well, ठीक है, GRE के अलावा they require a 4-year bachelor's degree, ठीक है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं था सालों से, राइट। सो that was one of the nudging point that UGC came up with a 4-year bachelor's degree system, ठीक है। एंड नाउ अगर आप 4-year बैचलर्स डिग्री के बाद इफ यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी एज वेल, सो दैट इज एडिंग मोर वैल्यू एंड एडिंग मोर वैलिडेशन to their vision of going from a 3-year to a 4-year bachelor's program, ठीक है। however it needs to be seen, it's very important कि it's no more 55% marks, ठीक है, कि 55% मार्क्स हैं आपके मास्टर्स में एंड यू आर गुड टू सिट फॉर द नेट एग्जाम। नाउ यू नीड अ हेल्दी नंबर ऑफ 75%। Look, if they are allowing you to sit for such an important exam, there has to be something that comes into picture that is very important। कोई आपको ये नहीं, because integrity is very important। अगर आपको कोई ये बोल दे कि 4 साल की, पहली बात एक स्टेटमेंट होगी कि बैचलर्स के बाद आप कर सकते हो पीएचडी, काफी वेग है। दूसरी स्टेटमेंट होगी बैचलर्स, 4 साल की बैचलर्स के बाद आप कर सकते हो पीएचडी, अगेन ये भी वेग है। बिकॉज द इम्पॉर्टेंट पार्ट is there
कि बैचलर्स 4 साल की बैचलर्स होनी चाहिए वो, एंड द मार्क्स, द परसेंटेज नीड्स टू बी 75%। अगर 75% नहीं है तो आप ये वाला रूट नहीं ले सकते। सो टू अवेल द ऑप्शन of appearing or pursuing a PhD post bachelor has more elements कि बैचलर्स होनी चाहिए, 4 साल की बैचलर्स होनी चाहिए, और उन 4 साल के अंदर आपका 75% मार्क्स होना चाहिए और इक्वलेंट ग्रेड्स एज पर द 4 year अंडर कोर्स। ठीक है। So this is very important because not all universities still offer you a 4 year bachelor's program. Okay, needs to be understood. So this is about the minimum requirement. Okay. So if a candidate, this is the earlier statement कि इससे पहले what was the pattern, because आपको masters भी करनी होती थी और उस masters में आपको 55% चाहिए ही होता था to sit for the NET exams, right? Now, this is the official statement given by the Honorable Chairman of UGC. The candidates with 4 year undergraduate degree, ठीक है, you need to understand the statement. वो कह रहे हैं 4 year undergraduate degree. तो ये मत समझना कि मैंने 5 साल का integrated course कर लिया है, then this funda also applies to me. नहीं, तो आपके इसमें नहीं apply होता. The funda applies to the student जो कैटेगरिकली बैचलर्स डिग्री है उनके पास, दे आर अंडर ग्रेजुएट बट विथ 4 year अंडर डिग्री। ठीक है। सो दैट इज द एसेंस ऑफ द एंटायर स्टेटमेंट। कैन नाउ डायरेक्टली परस्यू, ठीक है, आप डायरेक्टली परस्यू कर सकते हो पीएचडी एंड अपीयर फॉर नेट एग्जाम एज वेल। ठीक है। तो बीच में जो मास्टर्स का क्राइटेरिया है दैट इज कंप्लीटली रिमूव। Such candidates are allowed to appear in a subject in which they want to pursue a PhD irrespective of the discipline they obtain the 4 years. So look, यहाँ पे it confirms कि if I'm coming from any stream, for example, I'm coming from history, ठीक है, but मुझे PhD economics में करना है, then अगर मैं इस मोड के थ्रू आता हूँ, which is 4 year bachelor's undergraduate degree with 75% marks throughout the 4 years overall, then I can actually change the domain or the stream from history, English, whichever I was pursuing, to economics. So this statement is very, very vital, very, very important कि I need not be doing economics alone in my bachelor's. मेरा मन किया 4 साल complete होने के बाद कि नहीं, मेरे को PhD, for example, मेरे को economics में करनी है. So I can do that. No one can stop me. This is the liberty that has been given by the UGC with this particular amendment to their entire NET and PhD scenario. Okay, so it's very, very important. Okay, because the funda or the vision with UGC came with the 4 year program was this only. The moment or with every passing year, student tends to learn things. ठीक है, जब वो चीजें learn करते हैं, so they think of different perspective, they think of different horizons. ठीक है, तो they can develop interest into different courses. कि अगर मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, मे बी सेकेंड ईयर में मेरे पास ऑप्शनल में इको आया, फॉर एग्जाम्पल इको आया और मुझे इको बहुत पसंद लगा, कि उनको इतना अच्छा लगा कि आई डोंट वांट टू परस्यू कॉमर्स एट ऑल। ठीक है, तो आई हैव इन सब्सिक्वेंट ईयर या सेमेस्टर मैं फिर से इको के कुछ ऑप्शंस लूंगा, एंड देन बाय द टाइम फोर्थ ईयर कम्स इन, थर्ड ईयर एंड्स, तो आप फाइनल ईयर में थोड़े और इको के सब्जेक्ट्स ले लोगे, एंड देन यू फाइनल कि नहीं, मेरे को पीएचडी करना होगा, नेट का एग्जाम देना होगा, सो आई विल गिव इट इन इकोनॉमिक्स, एंड वाइस वर्सा। मतलब इको का बच्चा भी कॉमर्स में जा सकता है, इट्स इक्वल। ठीक है, so this gives you the liberty to think beyond your domain, beyond your subject. और यही एजेंडा है इस पूरे सिनेरियो का, चाहे वो 4 year प्रोग्राम हो, चाहे वो allowing you to sit for NET and PhD हो, जो भी है, this is the entire funda behind this entire system. ठीक है। Now, the candidates have passed a 4 year or a 8 semester bachelor's degree program should have minimum 75 aggregate. ये point काफी important है. You can't skip this. ठीक है, 75% marks in aggregate or of course equivalent grades
on a point scale wherever the grading system is followed. ठीक है. सो ओवरऑल चाहे आपके पास ठीक है परसेंटेज सिस्टम नहीं है, ग्रेडिंग सिस्टम है, तो उसके कंपैरिजन में उसको इक्विवेलेंट जब आप करोगे देन इट शुड मैच 75% ओवरऑल. So overall, the move for some can criticize, of course, because masters is important, and even we believe masters is very, very important. Okay, because that gives you more in-depth knowledge, which a 1 year bachelor's course might not. Okay, but that is one point of view. The others will feel कि नहीं यार, it's a shortcut, but honestly speaking, there is no shortcut as such. अगर आपको लगता है कि आफ्टर बैचलर्स आप पीएचडी के लिए बैठोगे, नेट के लिए बैठोगे, आपको चीजें क्लिक होंगी, देन यू आर रॉन्ग अबाउट इट. ठीक है. सो देयर इज अ लॉट दैट यू लर्न एट मास्टर्स लेवल, but of course there are always both the sides to any situation. So this is something we'll discuss in detail. So overall, we'll consider it as a normal scenario and just try to discuss as much as possible. Okay. Then finally, of course, the relaxation of 5% marks or its equivalent may be allowed for those belonging to SC, ST, OBC, differentially economically weaker section, and other categories candidates as per the decision by the UGC from time to time. So finally, the relaxation of 5% marks is also mentioned, and it will be as per the decision of UGC from time to time, like any other entrance exam. Okay. So overall, these are the details for the PhD, which you can pursue after a 4-year bachelor's program. Okay. So let's see how this entire thing turns out to be, how fruitful, how much positive it has, how much negative points it has, that remains to be seen. But this was the information we needed to share. So that's it. So we have gone through about the UGC NET, the program through which after 4 years of bachelor's, you can pursue PhD and NET exams, right? So this is about it from this particular session, and we will meet in the next session. Okay, guys. Thank you so much.